मैं केजरीवाल जी से कहूँगा कि इस पर राजनीतिक नौटंकी जो करना है वो नहीं होनी चाहिए। आप वो राजनीतिक नौटंकी में बड़े माहिर हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा, उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। Namaste, Jai Hind and welcome to this edition of The Right Stand. I'm Anand Narsimhan. Each year it's the same story, ladies and gentlemen, and sadly nothing changes for the residents of the Delhi-NCR region. This is home to nearly 35 million people. The Delhi-NCR is facing a health emergency as the air quality continues to worsen, even as the national capital braces for Diwali festivities and the onset of winter. Now, on this Tuesday, the Supreme Court pulling up state governments for failing to tackle the issue of air pollution. Talking tough on pollution, the SC said that Delhi can't be made to go through this. The apex court highlighted that farm fires are major contributors to air pollution and no solution has been provided to the same year after year. Pulling up the Aam Aadmi Party, the Supreme Court said schemes like odd even and are mere optics and asked states to ensure that stubble burning or parali burning by farmers is stopped. The Aam Aadmi Party ensured that it would tackle air pollution if chosen to power in Punjab. That's the assurance that they gave, but nothing has changed on ground. The simple question, ladies and gentlemen, is, has the Aam Aadmi Party failed on promises, be it Delhi or Punjab, especially with the issues and the tall claims being made on Parali? Hello, Moto. Let's go straight across to Anand Ranganathan, political commentator and author, Manjinder Singh Sirsa, spokesperson of the BJP, and also Akashdeep Muni, political analyst. Namaste and Jai Hind, gentlemen. Thank you very, very much. Manjinder Sirsa ji, is it only the Aam Aadmi Party's mistake? Are they the only ones who failed to deliver on promises? See, first, when you make a promise, it is your job to deliver it. We need to understand one thing. He is the Chief Minister of Delhi. Anything if it is done by Lieutenant Governor, he keeps shouting कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरे काम में एलजी क्यों काम कर रहा है, ये काम हमारा है, तुम्हें शौक है तो इलेक्शन लड़ लो ना, इलेक्शन लड़के आ जाओ ना, इतना शौक है काम करने का तो. The problem is today तो even Supreme Court has categorically said कि ये जो ऑड इवन की ड्रामेबाजी है, ये नौटंकी को बंद किया जाए, ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी को बंद किया जाए, ये ब्लेम गेम को बंद किया जाए. आफ्टर ऑल ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. यू आर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. हैव यू सीन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली फ्रॉम लास्ट 6 days? नो. वो दिल्ली के ईडी से भागा है, सीबीआई से भागा है, दिल्ली के पोल्यूशन से लोगों से भागा हुआ है. एवरी ईयर ही यूज्ड टू से कि ये स्टबल बर्निंग पंजाब से आता है, इसलिए हमारे पास पोल्यूशन की प्रॉब्लम है. मैं आपको 2 लाइन पहले वेरी इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ. इन पंजाब इटसेल्फ द चंडीगढ़ इज द कैपिटल. पंजाब के चंडीगढ़, देश की चंडीगढ़ की, पंजाब और हरियाणा की राजधानी में आज AQI लेवल क्या है? वहाँ 100 है, 105 है, मैक्सिमम 110 जाता है. वहाँ पे तो स्टबल का कोई असर नहीं हो रहा. दिल्ली में आप आके कह देते हैं कि स्टबल पंजाब का दिल्ली में पहुंच गया. जब हम बार बार हर साल चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे वहां का धुआं नहीं आता, तो अरविंद केजरीवाल कहता था देखिए आता है. अब हम कहते हैं कि अच्छा आता है, तो अब बताइए क्या किया. अब तो पंजाब में पराली भी जलाई जा रही है, पंजाबी का विकल्प भी नहीं आप दे पाए. अरविंद केजरीवाल वाज द वन पर्सन, इफ यू रिमेंबर, he came to in Punjab, he said मैं आपको 3 महीने में पराली स्टबल बर्निंग का आपको सोल्यूशन दूंगा. एक ऐसा सोल्यूशन है, हमने पूसा से खरीदा है, उसको डाल देते हैं, पराली अपने आप खत्म हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी, हम करके दिखाएंगे. अब नाउ पीपल आर आस्किंग वेयर इज दैट प्रॉब्लम नाउ, जो आपने कहा था खत्म करके देंगे, वेयर इज दैट सोल्यूशन नाउ? एंड ही इज ऑन पॉलिटिकल टूरिज्म टू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश. क्या उसने एक बार सूद ली? आपके बच्चे भी यहाँ पे हैं, मेरे बच्चे भी यहाँ पे हैं. यू टेल मी, क्या आपके पेरेंट्स की वो भी वोटर थे, आप भी वोटर थे, आपका परिवार वोटर था, तो उसने सूद ली कि मेरे दिल्ली के वोटर्स के साथ क्या हो रहा है? वो क्या कहता है? अब कहता है यूपी जिम्मेवार है, अब हरियाणा जिम्मेवार है. बस अरविंद केजरीवाल ही नहीं जिम्मेवार, बाकी सारा देश दिल्ली की प्रॉब्लम के लिए जिम्मेवार है. अगर आपसे नहीं होता तो छोड़ दीजिए ना. अरविंद केजरीवाल जी छोड़ दीजिए. आपका काम केवल लूटना है. अब एक देखिए, स्मॉल पोल्यूशन, स्मॉल थिंग, स्मॉल 10 seconds प्लीज. आप यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड हाउ सीरियस इज ही. जो उन्होंने दिल्ली के अंदर एयर प्यूरिफायर लगाए, जो उनको वो ही बंद पड़े हैं.
जो उन्होंने कहा कि मैं स्मोक लेके आया हूं, कटर्स लेके आया हूं, वही बंद पड़े हैं, वही चालू नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हाउ सीरियस ही आपके पास 70 करोड़ रुपए अपना शीश महल बनाने को घर तो है, लेकिन दिल्ली को देने को आपके पास वो स्मोक। The point is, why is this conversation happening when the choke has already happened? Why is there nothing which was done ahead of this choke? Akashdeep Muni, your point of view. Yeah, as there are two against me, one, so I hope that I'll be getting twice the time. First and foremost is that, about the farm fires. Let me bring some facts onto the table. The farm fires in 2021 were 79,000. As per government report, central government report, okay, 2000, it was 79,000. In 2023, when Aam Aadmi Party is in power, it is 19,000 till now. And by the end of this stubble burning, it will go maximum to 25-30, which will be about, now it is 76% less. If it goes to 30,000 also, it will be 56 to 60% less. So farm fires have come down only under Aam Aadmi Party government, not done by Bharatiya Janata Party, not done by Congress. Okay, this has to be very clear. Second point, now we are very much inquisitive that why there is so much pollution and everything. Very good. The DPCC chairman is Ashwini Kumar. Ashwini ji. Ashwini ji is the DPCC chairman. After DPCC chairman he did not pay IIT Mumbai and IIT Delhi the amount for smoke towers in Connaught Place. The Connaught Place smoke tower is closed because of the DPCC chairman Ashwini ji, who is a member of Bharatiya Janata Party, Delhi Pollution Control Board. Initially they close the smoke tower and then they go and then they make selfie videos that smoke tower क्यों बंद है? भाई अश्विनी कुमार जी से क्वेश्चन किया आपने डिप्टी चेयरमैन से क्यों स्मोक टावर बंद है? नहीं. आपने ये क्वेश्चन किया कि आनंद विहार का स्मोक टावर क्यों बंद है? डिप्टी चेयरमैन से क्वेश्चन किया? नहीं. बट आपको जब क्वेश्चन करना है तो आपको आम आदमी पार्टी से क्वेश्चन करना है. एक लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि देयर हैज बीन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स डन बाय आम आदमी पार्टी and there will be more initiatives. Last point, 5 seconds I will be taking. In Punjab, there was an initiative to bring down the stubble burning to zero. And this initiative was taken by Punjab government and Delhi government that we will be providing direct cash transfer to the farmers, making it zero. It was central government who denied it. The Punjab government and Delhi government said हम 60% पैसा देंगे, आप 40% दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं कर दिया, ऐसा बता दे सबको. और फिर ये बोलेंगे कि फिर पोल्यूशन क्यों होता है, बताते हैं. ठीक है, और फैक्ट बताइएगा, इधर उधर की रेटरिक मत करिए बस. हाँ, नहीं बताते हैं आपको. इधर उधर की बातें करना आपका काम है, हमारा नहीं. जब ये स्मोक टावर लगाए थे तब तो अरविंद केजरीवाल पीसी करके कहे हमने स्टोक कुमार लगा दिए, हमने स्मोक टावर लगा दिए, देखिए हमने दिल्ली को पोल्यूशन से बाहर निकाल दिया, हमने पोल्यूशन खत्म कर दिया. और जब बंद हो जाए ये बीजेपी ने बंद कर दिए, हमारे पास नहीं है, ये बीजेपी का काम है. ये नौटंकी कभी दुनिया आपने पहले कभी, ये आतिशी 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी. और यार सुनिए ना, बताते हो आपके लगाए हुए हमें क्या पता कौन है. आपके लगाए हुए हमें क्या पता. My point is, hang on, Akashdeep Muni, Akashdeep Muni, one minute, Akashdeep Muni and Manjinder Sissa, Dr. Anand Ranganathan, nobody is to blame. There is no Paralisura. There is no. There is nothing. This smog is our hallucination, sir. This AQI is the AQI machines that have gone bad. NASA is showing images of Earth in another dimension, which is superimposing as far as Bharat is concerned in this dimension. What we are imagining, it's a figment of our imagination. Maybe your and my spectacles are a little foggy. That's why we see smog around us, sir. Good evening, Anand. I've been listening very patiently to my fellow panelists. I hope I'll be given the courtesy of uninterrupted time. Look, Anand, you're absolutely right. An AQI of 30 is considered safe and acceptable. In Delhi, it has touched 999. Meanwhile, Punjab farm fires touched a daily high of 3,500 2 days ago. The total cumulative Punjab fires are now in the range of 20,800 and the Parali burning season has just begun.
It is not the same as last year. Yes, there is reduction compared to the same time last year, but there the season actually began earlier and ended earlier. So here it might touch the same 70,000 odd fires. Now, the only way stubble burning will be banned is if we call it Parali Dahan, a sacred Hindu festival mentioned in the Atharva Ved celebrating Lord Vishnu burning down demon king Paralisura to rescue enslaved Maruts and storm king Rudra. Anand, only then will it be banned. Nothing phases these politicians, not even the Supreme Court. Remember in 2020, Supreme Court ordered, and I quote, "Stop stubble burning immediately or your entire administration and police will be held culpable even if one instance of stubble burning occurs in future," unquote. And what happened the very next day? Punjab recorded 6,700 farm fires, Haryana 364. Let me give you some perspective, Anand, because your viewers need to know this. Number one, during the stubble burning month, an area of 17,900 square kilometers or 12 times the size of Delhi is continuously on fire right next to Delhi for a month. 35 million tons of stubble is burnt. Number two, we are outraging only because Delhi is affected. 98 million tons of stubble is burnt every year all over India, all year round. UP 22%, Punjab 21%, Haryana 9%, AP 5%, West Bengal 5%. 3. Burning 98 million tons of stubble releases 149 million tons of carbon dioxide. 55% of carbon dioxide emission from all Indian transport. Number 4. The financial burden of treating respiratory diseases and accounting for man hours lost is 150 times more than the cost of machines needed for stubble extraction. But if our politicians thought like this, we'd be developed nations. 5. All that is required to stop stubble burning is buying 30,000 happy seeder machines. Cost $70 million. That's it. And taxpayers' money spent just on ads in the last 5 years by the center and by the governments of Delhi, Haryana and Punjab, $1,300 million. 6. A year ago, the state decided not to prosecute the farmers who burned stubble. That's why I say we became a banana republic the moment we became a republic. Now very quickly to the second issue, Anand, because it's very important. Kejriwal bringing in odd even as a solution. It is the classic needle in a haystack pursuit. Car pollution, the needle, is a minuscule contribution to the overall pollution PM 2.5 levels of Delhi. An extensive IIT Kanpur study on pollution that was accepted by DPCC and Kejriwal himself and formed the basis of GRAP says cars contribute just 2% to overall Delhi pollution, which means the odd even scheme is leaving 99% of causative agents of Delhi pollution untouched, even if it manages to reduce the 2% car pollution to 1%. The contribution of stubble burning, literally the haystack, to Delhi's pollution is as high as 35 to 40%. And yet, Kejriwal implements odd even because he feels reducing Delhi's pollution levels by 1% is worth all the hardship to the common man. But even here is wrong. Just 30 seconds. In a tightly controlled experimental setting, Anand, reducing car numbers by half would reduce the pollution caused by cars to half as well, from 2% to 1%. But a city is not a desiccator or a control setting. In fact, the pollution levels have increased during previous odd even schemes. They could so easily have decreased as well because weather patterns and wind blown sources dictate as much as 21.5% of Delhi's pollution level. This should have been obvious to anyone. For example, no one is burning paddy fields in Delhi, and yet Delhi's pollution levels have gone through the roof. Why? Because an area 12 times the size of Delhi is on fire. Imagine 12 Delhi is on fire for a whole month and we are trying to reduce Delhi's pollution level by 1%. Even Don Quixote would tell Kejriwal, Prabhu, charan kahan hai aapke? Kahan hai aapke charan? वो दिख नहीं रहे सर, अभी किसी को भी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इतना स्मॉग है. हमें हमारे ही चरण नहीं दिख रहे हैं, अगले के कहाँ से दिख जाएं. But my point is 3 state governments, $1,300 million worth of ad spends, and you couldn't spare $70 million. Right now, sir, the Punjab government's ad spends exceed the amount required to buy the happy seeder machines. You can challenge me on this data. The Delhi government's ad spends exceed the amount that by at least 3 to 4 times the amount that is required to buy these happy seeder machines.
Why I am holding out Delhi and Punjab? Not because there is anything against the Aam Aadmi Party, Akashdeep Muni. The point is, it was the Aam Aadmi Party. Please understand this. It was the Aam Aadmi Party that promised the people of Delhi and Punjab that we will solve this on priority, sir. And that priority has vanished. That's the anger. The aspect is not whether state is to blame or center is to blame. It's the promise that was made by Mr. Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party to the people of Delhi and the people of Punjab. That's where the issue is, sir. That's where the issue is. We will come back to this story and we'll get you all back once again very soon, because these numbers are not diminishing. They're only going to increase. That's why odd even is next week, not this week. Because we know the Parali burning will be at its highest sometime between the 15th and the 21st and the 25th of November. That's what the data says. Thank you, gentlemen. Have to move on because there's a big development in Bihar. Bihar Chief Minister Nitish Kumar once again stoking controversy with his remark, this time in the Bihar Assembly, while talking about the improved fertility ratio, that is a decrease in the overall ratio and the reduction in the number of births that have happened in terms of controlling population. Nitish Kumar's almost graphic detail underlying the need for girls' education to check population growth. It's not what he was trying to convey. It's the manner in which he conveyed, the tone that was adopted, not just Maryada breach, ladies and gentlemen, but absolute sexism reeking off a man who's not just perhaps one of the longest serving chief ministers the country has seen, and also especially with Bihar, but the other thing is he actually wanted to become the prime minister. He wants to become the prime minister of this country. Is this the language that he should have used? That's the big question. We are not even trying to play out what he said in the assembly because the tone of it is not something that we would want families to watch. The body language itself is something that has left a lot of people in disgust. You're given to understand that some female MLAs, women MLAs came out shocked, and some of them virtually, literally, nearly in tears. Anand Ranganathan with us, Guru Prakash Paswan should be joining us, and Mayank Sinha of the JDU should also be joining us. Anand Ranganathan, he wants to be the convener of the India Alliance and hopes to be Prime Minister of the country. Is this what we expect? The tone and the language, manner used by Mr. Nitish Kumar on the floor of the House? No, I mean the chief of Patliputra. This is by all means a really crass remark, and I condemn it unequivocally. There is no two ways about it. But what surprises me, Anand, is the fact that because he is in this alliance, this so-called India Alliance, the Congress is completely silent. The Congress has not criticized this at all. Remember, when possibly, I think a year or so ago, when the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Stalin, felicitated the killer of Rajiv Gandhi, the Congress was mum even then. So what kind of alliance is this? If you are going to completely stay silent on all that is happening that is wrong with your alliance partners. And here, with what face will Congress now preach or talk about the wrong things that the BJP or the NDA alliance partners have done, because they've also done the same thing. But with what face? With a hypocritic face, unless they condemn Mr. Nitish Kumar tonight, and I expect that condemnation. Otherwise, this is a complete farce. It's not about the fact that the fertility ratio has come down because of the fact that women have become educated. But the tone in which he said, the actions, and somewhere he said that it's inevitable that what is going to happen, women have no other choice except for the fact, and how he communicated. Could there not have been a better way? And you raise an important point, Dr. Ranganathan. We've just got a reaction coming in from Tejasvi Yadav, and Union Minister Ashwini Kumar Chaubey has also reacted on this. Let's quickly listen in. एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल
जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है, और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। Are you willing to treat it as just sex education, Dr. Ranganathan? Is this how you would explain it as a scientist? No, I mean, this is absolutely condemnable because, one can explain it with logic and rationale. For example, the TFRs of many states are coming down. Some of the states where you would expect the population not to be, controlled or controllable any longer, in fact, their TFRs, Anand, are less than 2, which is the basal level. So, decadal rates also are coming down. India is controlling its population, but here again I have to stress, this bogey of population explosion is being used repeatedly by politicians on either side of the aisle. What they don't say is that if you look at, it is not the population, but the population density that needs to be looked at. And if you look at the arable land of India, then our population density in terms of the rest of the world is ranked 7th. There are nations above us, 6 nations that are more developed than us, that have greater population density than we do. So every time we talk of pollution, every time we get these vulgar remarks or sex education or so many other reasons are brought to, politicians are the ones who stay away from the fact that you need not, the development is, there might be some correlation with population explosion, but the more important worrying factor is population density. So, this is completely wrong on both counts, Anand, not only on the use of the language, but also on the use of logic and rationale. What gets the fact is that he's such a senior leader. It's sometimes it's not about what you want to say, it's about how you say it. And where, yes, factually and in terms of rationally, whether logically also you say the logic also defeats the purpose, the way whatever benchmark is used or minor. But if women are being more educated, but he's still saying that they are still objects. They are going to be treated like objects, but now the object has a choice. That's what came across. Should there not be an apology? Meanwhile, Tejasvi Yadav says just treat it as sex education. Yes, and he talks about school education. I'm not very sure, but is it the same Tejasvi Yadav who's not even finished school? So I don't know what education he received as far as the kind of education he's talking about. But the fact of the matter is, the least one expects, and politicians never render an apology. They say, I regret what I said. At least I expect Mr. Nitish Kumar to say that I regret what I said, the choice of words. It's highly offensive. But, it is in keeping with a lot of parliamentarians, including MLAs and MPs, or from the legislative assemblies, who've actually used really misogynistic, patriarchal, and downright offensive language for our women, especially the member of parliaments. And I don't need to repeat the kind of things that have been said by the peers and colleagues of Ms. Priti Irani, downright despicable, So it is in keeping, I'm afraid. Well, I'm going to just check if we have Guru Prakash Paswan and Mayank Sinha with us. We'll try and get them on the phone in just a bit. Yes, Mayank Sinha, leader of the JDU, is with us. Mayank Sinha, do you think the tone adopted by Mr. Nitish Kumar, जिस तरीके से उन्होंने और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, क्या वो उचित है? क्या एक चीफ मिनिस्टर को, और जैसे इतने वरिष्ठ नेता हैं नीतीश कुमार जी, क्या उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है? नहीं, आप एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए जरा, मैं क्वेश्चन
मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो आज सदन में कहा, जिस तरह से कहा, जब वो टीएफआर की बात कर रहे थे, पॉपुलेशन रेशो और फर्टिलिटी रेशो की बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा और जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, क्या वो एक सीएम को शोभा देता है? और इतने बड़े नेता जैसे, वरिष्ठ नेता जैसे नीतीश कुमार हैं, क्या उनको इस तरीके से कहना चाहिए था, बात करनी चाहिए? देखिए, आज तो ये सोशलिस्टों के लिए गोल्डन डे, और इसमें समाज के मार्जिनल, डिप्राइव्ड, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के जो लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया का जो आज दौर बढ़ा है, और ये परिवार की आक्रामकता का दौर नहीं है, ये कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी की विनम्रता वाला प्रस्ताव है आज का दिन। और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जो 1978 में कर्पूरी फार्मूला के तहत आरक्षण की पहली बार, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की, आप आरक्षण पर भूमिका मत बांधिए। आ रहा हूँ। तो उन्होंने महिलाओं को 3% आरक्षण देने की बात की। 3% आरक्षण महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं है, यहाँ पर आबादी नियंत्रण के चक्कर में जिस तरह से महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, मयंक जी, उस पर बोलिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, महिलाओं को आरक्षण देकर सरकारी नौकरियों में यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, और क्या उन्होंने बोला है? कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो रोज आदमी घूमने भी जाता है, शादी के बाद रोज आदमी आइसक्रीम रेस्टोरेंट में भी जाता है। तो आप लोग, मीडिया के लोग क्या निकाल रहे हैं? नहीं, रोज आदमी ही जाता है। फिर आप भी वही मानसिकता दिखा रहे हैं कि चॉइस जो करेगा वो आदमी करेगा, औरत के बाद कोई चॉइस नहीं। आपकी मानसिकता वही मानसिकता जो नीतीश बाबू दिखाए ना, जिस भाषा का प्रयोग किया, वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, I think you are directed by BJP. No, you can make whatever allegation you want to make about me, but I want to understand what mindset are you directed by, sir? What language are you directed by, sir? And what thought process are you directed by, sir? Don't try and make personal insinuations against me to try and get away with what is supposed to be a deplorable comment made by a sitting chief minister, a tall leader like Mr. Nitish Kumar. He should have come out immediately and said that please don't try and misconstrue, and I'm sorry if I have offended the women of Bihar. That's what he should be saying. I am not any such kind of using the words, okay? आप सर, यू आर यूजिंग द काइंड ऑफ लैंग्वेज। आपकी सोच ही देखिए, आदमी आइसक्रीम ना खाएगा, आदमी खाएगा का मतलब क्या है? अरे परिवार के साथ जाता है, तो परिवार की बात करिए ना, आदमी क्या बात की है आप बोल रहे हैं? आपकी मानसिकता क्या है? ठीक है, हम अगर हमारे परिवार के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन, ना, आप परिवार की बात अलग होती है। जब आप ये कहते हैं आदमी का रोज का ये है, तो वो मानसिकता अलग है। पुरुष प्रधान मानसिकता है आपकी, जो आपने दर्शाई है, वही जिस पर नीतीश कुमार जी के कहने पर आक्षेप है। चलिए, धन्यवाद मयंक सिन्हा जी and Anand Ranganathan. Thank you very much. We're going to take a short break, ladies and gentlemen. When we come back, we're in conversation with Union Minister Shri Piyush Goyal at the Hindustan Times Leadership Summit. Stay with us. Namaste, Jai Hind, everybody. Thank you very, very much. And Piyush ji, thank you very much. I have a long list of questions, but I'm going to keep it aside and ask him first up. Piyush ji, ground पे माहौल कैसा है? आप राजस्थान, हम तो ग्राउंडेड लोग हैं, तो हमको तो ग्राउंड पे ही पता चलता है सब कुछ ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है राजस्थान में? राजस्थान तो एक तरफा बीजेपी के लोग जीत रहे हैं। राजस्थान में जो मेरा अनुमान है, मैं परसों ही वहां पे था, कि जो आक्रोश है गहलोत जी के खिलाफ, जिस प्रकार से लोगों को ध्यान में आ रहा है कि बाकी प्रदेश कैसे विकास की धारा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उनके चारों तरफ वो देख रहे हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, पूरी तरीके से राजस्थान के चारों ओर विकास की लहर चल रही है। ईमानदार सरकारें जनता की सेवा में जुटी हैं
और राजस्थान ने अनुभव किया कि वहां पे ना विकास है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के कांड बाहर निकल रहे हैं, आपसी लड़ाई के तो किस्से लेजेंडरी हैं। लोगों में एक भावना आ गई है कि गहलोत सरकार अब नहीं चल सकती। पर ये आपसी लड़ाई तो बीजेपी में भी है, कह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ पे हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में काम करते हैं और इससे बढ़िया प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है कि हमारे कोई मंत्री को भी, केंद्रीय मंत्री को भी कहा जाता है कि आपको चुनाव लड़ना है तो हम बड़े खुशी खुशी लड़ते हैं। हमें कहा जाता है कि आपको इस बार काम अलग प्रकार का करना है, बड़े खुशी खुशी दूसरे काम करते हैं। अब मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन अपना कैबिनेट रैंक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पद को पकड़े बैठे हैं, जरा छोड़ने को तैयार नहीं। गहलोत जी को कहा कि आप पार्टी की सेवा करिए, बोलते हैं मैं क्या करूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। अब ऐसा जो सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ है, वो जनता को पसंद नहीं आता। जनता भली भांति देख रही है कि एक तरफ कार्यकर्ता भाव से जनता की सेवा के लिए लोग काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ता की और कुर्सी की राजनीति कांग्रेस में स्पष्ट दिखाई देती है। बट जो जनता के लिए बेनिफिट्स है which the Gehlot government has given, it seems to get a lot of traction on ground, saying कि गहलोत की सरकार में हमें ये सब कुछ मिल रहा है, बट आप कह रहे हैं कि आप रेवड़ी नहीं बांटेंगे। सो देखिए, आपने ध्यान किया होगा कि इस प्रकार की रेवड़ियां तो कांग्रेस हर चुनाव में वादे करती है और कई बार कुछ ना कुछ देने के भी प्रयास करती है, पर हमारे देश के लोग बड़े समझदार हैं। मुझे याद है एक चुनाव में मैं दक्षिणी राज्य में कैंपेन कर रहा था, तो मेरा ड्राइवर उसी राज्य से आता है। मैंने पूछा कि भाई किसका हाथ भारी है, तो उसने बताया फलानी पार्टी जीतेगी। मैं कहा उसने क्या ज्यादा प्रलोभन दिया आपको? बोलते हैं नहीं, वो तो दोनों पार्टियां देती हैं, वो तो हम दोनों से ले लेते हैं, पर हमें मालूम है कौन हमारे लिए अच्छा है, हम उसको ही वोट देते हैं। इसी प्रकार से आज हमारे देश की जनता इतनी समझदार है कि अगर कोई छोटे मोटे प्रलोभन देने की कोशिश भी करे अशोक गहलोत जी, वो उसके झांसे में नहीं आएंगे, वो तो ले ही लेंगे। पर उन्हें मालूम है कि जो मोदी जी ने दिया है, चाहे वो 4 करोड़ लोगों को, लगभग 20 करोड़ लोग उसमें कवर हो जाते हैं, 4 करोड़ परिवार में, उनको घर, आखिर 2 लाख रुपए का घर, कितना भी आप छोटी मोटी रेवड़ियां बांट लो, वो 2 लाख के घर के बराबर कभी बनेंगे ही नहीं जिंदगी में। बट समवेयर डोंट यू सी अशोक गहलोत एज फार मोर एज अ फेस? गहलोत जी तो कहते हैं मैं तो यहां खड़ा हूं, आई एम द चीफ मिनिस्टरियल फेस। बीजेपी से कौन है? आई एम आस्किंग यू अबाउट। आज तक ये नहीं बोला है कि वो हमारे सीएम कैंडिडेट है। आप जरा सचिन पायलट जी के बयान वगैरह देख लो, उनकी जो सुलह की मीटिंग हुई उसमें तय हुआ हम कोई नाम नहीं बताएंगे, हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे। तो मिल के सभी लोग लड़। बट ये कर्नाटक में हमने देखा डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, जयवीरू, दे केप्ट द नैरेटिव बिटवीन देम। नाउ हियर अशोक गहलोत एंड Sachin Pilot are keeping the narrative between them. So it's all about the conversation between them and not about who within the BJP. I am asking you this because it's a totally different situation in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh mein, they are saying last time also it was nothing against Mamaji. It was just that we are tired. We want somebody new. There seems to be a sentiment on ground saying we want somebody new. And somewhere the BJP is not ready to offer that. देखिए, बीजेपी में जो सामूहिक शक्ति है, हमारे अलग अलग नेता जो प्रभाव रखते हैं लोगों के बीच में, और इतना लोगों को पक्का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई सत्ता के ऊपर लड़ाई नहीं होगी, सत्ता के ऊपर पार्टी नहीं बिखरेगी। और आज के दिन ये तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, विशेषकर इन तीनों राज्यों में लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार आए, जो जिस प्रकार के कांड चाहे गहलोत जी के साथ एसोसिएटेड है, चाहे बाघेल जी के साथ एसोसिएटेड है, जिस प्रकार के वजह से एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई है कि लोग आज तक समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या जादू कर दिया जो इतनी संपत्ति, प्लेन, होटल्स, देश विदेश में कारोबार कहां से खड़ा हो गया।
मैं कमलनाथ जी की बात कर जी, रहा हूं, ये सब चीजों को भी लोग अच्छी तरीके से भली बात बट इज इट एक्चुअली सच अ बिग स्टोरी ऑन ग्राउंड? छत्तीसगढ़ में देखिए, हमें तो फीडबैक ये मिला है भाई, चावल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट व्हाट इज हैपनिंग विद बेटिंग ऐप और मनी ट्रांजैक्शंस देयर. इन चावल लास्ट टाइम अराउंड 250 रुपया क्विंटल swung it. This time around, if Baghel ji is saying manifesto आने दो फिर देखते हैं, so then how is the BJP going to swing the narrative? मुझे नहीं लगता कि पिछली बार भी कोई चावल 250 रुपए के ऊपर लोगों ने चुनाव में निर्णय लिया होगा. अगर सिर्फ ऐसा ही होता तो उसके बाद लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में नहीं जीतती. मुझे लगता है कि चावल तो आज मोदी जी मुफ्त में हर महीने 5 किलो सभी को No, but that's where the difference, Piyush ji, that at the center there is nobody questioning Prime Minister Narendra Modi. At the local level, is there an issue with perhaps not strong leadership or convincing leadership with the BJP? Is that a political problem, and is that a barrier that you need to break? Theme is breaking barriers, so I'm bringing it and tying it up with what we're supposed to talk. मुझे नहीं लगता that's a barrier. मुझे तो वो एक हमारी शक्ति दिखती है. That's our strength. The strength lies in the fact that BJP is a party with committed leaders, with leaders who are rooted to the ground, who are connected with the people, who display the highest level of ethics and honesty in their work. And I think the people of India have recognized and are more and more conscious that honest governments are the ones which can truly give benefits to the common man, truly help them, their next generations, get a better life, a better future. And we, for one, are very convinced that this nation is going to fight against corruption, is going to fight against the politics of dynasty, is going to fight against the politics of appeasement, चाहे वो